Hello. Hello. Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Harya. Okay. What about rest? बच्चों ने भी सर अभी ज्वाइन कर रहे होंगे. okay. So today we have discussed in the classroom basically the cryptography related topic. Clear? So in this tutorial basically we have a questions on the bottom. You can see like if you see, what do you understand by cryptography? This was the first question. That is the question number 14. Clear? Yes, sir. And question number 15, that is, what are two protocols defined by Internet Protocol Security? This is IP security. So the question 14, I think you will take care of. Yeah, question 14 तो हो जाएगा. Hello. Yes, sir. Question 14 तो हो जाएगा. Yes, sir. हो गया. Okay. Yes, sir. और जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसके बाद वाला से वो भी कर लिया था, मतलब इंटरनेट से देख के मतलब सबमिट कर दिया था ना ट्यूट. दो टाइप के होते Yes, sir. हमने भी. हैं, ऑथेंटिकेशन हेडर और दूसरा होता है एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ESP. ओके. चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग उसी से रिलेटेड देखते हैं इसमें और क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड. क्लियर? Okay, so just sharing the file of this related topic. Just wait. And this is question, that is question number 13. You all have done. Explain World Wide Web. यस सर. हेलो. ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये हो गया वर्ल्ड वाइड वेब. हाँ सर, ये भी कर लिया था. Yes, sir. And how we can access the data using HTTP protocol. Yeah, you can say HTTP protocol can access data through www. So have you correlate both of them? Okay, have you correlate HTTP with the www? यस सर. हाँ सर, जो क्लाइंट होता है वो हमारी साइट पे पहले रिक्वेस्ट भेजता है, फिर साइट के पास एक्सेस जाता है कि मतलब ग्रांट करना है रिक्वेस्ट को या नहीं. अगर जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है तुरंत ही हमारे पास वो वेब पेज लोड होके चला आता है. Okay. Just wait. I'm sharing the file. Just wait. So,
Okay, so we have the file now. Okay, so this was about the HTTP protocol जिसमें requests and responses are exchanged. So it is a client server interaction. You can see here. So जिसमें हमने बताया था आपको कि एक मैसेज रिक्वेस्ट सेंड होता है, HTTP रिक्वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, from client to server, clear? Or we can say from a web browser, computer running a web browser, and request, that is the HTTP request, is sent to the web server, and the response is coming from back to the web browser, that from the web server. So इसके लिए हमने आपको बताया था कि बेसिकली जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेजेस हैं, ये हमारे इनका भी फॉर्मेट होता है. सो वी हैव अ फॉर्मेटिंग फॉर दिस. तो रिक्वेस्ट मैसेज में जो आपका आता है वो रिक्वेस्ट लाइन आता है, हेडर लाइन आता है, मैसेज बॉडी है. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टीटीपी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा. वी आर हैविंग द रिक्वेस्ट मैसेज एंड रिस्पॉन्स मैसेज. ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट मैसेज है उसके अंदर रिक्वेस्ट लाइन, हेडर लाइन, मैसेज बॉडी, ये तीन चीजें हैं उसके अंदर कवर होती हैं. ठीक है, और जो रिस्पॉन्स मैसेज होता है उसमें हमारा स्टेटस लाइन, हेडर लाइन है, मैसेज बॉडी. दिस इज द रिस्पॉन्स मैसेज. जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टेटस लाइन में जो रिस्पॉन्स आता है, दैट इज सपोज टू ये 404 कई बार हम लोग को अपीयर होता है, दैट इज नॉट फाउंड. क्लियर? So request resources that is not found, so it will indicate 404 response message here. So now जो कुकीज वगैरह होते हैं, ठीक है, कुकीज, they have four जी सर. components, that is website database. तो इसमें क्या होता है, if the web server want to use cookies after receiving a request from the web client, ठीक है, मीन्स अगर एक वेब सर्वर कुकीज को यूज करना चाहता है आफ्टर रिसीविंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब क्लाइंट, so it generates a unique identification number and is stored in its database में stored रहता है वो, तभी हम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं. ठीक है, बार बार टाइप नहीं करना पड़ता. so it will be stored in as a cookies. clear? उसके बाद आता है HTTP response message cookies header line. so the cookie header line in the response message hold the unique identification number generated by the server. This is what HTTP response message, that is the cookie header line. Clear? Then we have a cookie file. Cookie file is kept on the user's end system and is managed by the user's browser. When the browser receives an HTTP response message with a cookie header line set, then the browser extracts the unique identification number and appends a line in the cookie file. So an entry in the cookie file includes the host name and the unique identification number. Then we have HTTP request message cookie header line. So before the web client sends a request to the web server, it checks the cookie file for any entry that matches the web server's name. If the match is found, the associated unique identification number is set in the HTTP request message. That is the cookie header line. Clear? So ये देख सकते हैं how the web cache occur in HTTP protocol. So we have a client, then web cache is there. So ये हमने एक बार और आपसे डिस्कस भी किया था बीच में जब हमने HTTP डिस्कस किया था. ठीक है, then we have a origin server. So exactly जो भी client request भेज रहा है, it is going to the web cache and then it is transferred to the origin server. Clear? Then it the server respond with the HTTP response, that is again cached by the in between web cache. Then the response is coming to the client. So exactly it holds the request as well as response into its database, that is called web cache.
Okay, I think this is clear to all of you. Yes, sir. Okay, so these all things we have discussed. Then we have discussed the okay. So somebody have problem in the I think DNS and URL based questions. Yes, DNS and URL based questions. So if talk about DNS again, I come to that particular topic. Okay. So in this particular topic, basically host in a network have unique address for identification. You all know that any host in a network have unique address for the identification. So on the internet, hosts are identified by the host name and IP address. जो भी इंटरनेट सर्विसेज होती हैं उसमें कोई भी होस्ट होता है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं by its host name and IP address. So a host name is a mnemonics name like www.uct.ac.za. Yeah? The IP address is usually written as 4 decimal values, each represented a byte or octet, separated by a period such as 192.168.3.1. तो इन्होंने बता दिया कि जैसे ये हमारा host name है, this is the host name, clear? And this is the IP address. So the domain name system translate host name to IP address, fulfill a critical role in the internet infrastructure. DNS basically क्या करता है, दोनों को combine करता है, जैसे host name और IP address को, ठीक है? Then it form a DNS system basically. It translates the host name and IP address. Clear? So it is made up of two components basically, DNS server and DNS client. So we are having the DNS server and DNS client. Server क्या करता है? It implements a distributed database that contains the mapping of the host name to the IP address. So DNS server basically implement करता है distributed database जो क्या करता है, that contains the mapping of the host name to, जो mapping कराता है host name की IP address से, ठीक है? So there are millions of IP addresses on the internet. To deal with the issue of scale, the domain name system uses many servers organized in a hierarchy and distributed in different parts of the world. Yeah. So each server in the hierarchy hold a portion of the database. So we have a figure also. So you can see we have a root domain name server. So this is the top level domain name server that is called the root. इसके बाद इसको हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं com DNS सर्वर एंड org DNS सर्वर. हमने आपको एक पीडीएफ दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि जो हमारा रूट सर्वर होता है इसको हम जब डिवाइड करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल बेस पे करते हैं, कंट्री बेस पे करते हैं, ठीक है? So Yes, sir. this is the division, that is com DNS server, then org DNS server. Com is further divided into you can say hubpage.com. This is the DNS server here. Then org DNS server is further divided into un. इसके नीचे आप फिर से फर्दर करेंगे तो वो इसमें अटैच होता चला जाएगा. This will be सर attached to एक this. .gov भी होता है ना गवर्नमेंट वाला, हाँ हाँ वो तो भी सर होता वो है. भी हमारा org में ही आएगा? क्या हो गया? सर तो फिर जो .gov है वो भी हमारा org में ही आएगा, मतलब org DNS सर्वर्स में या कॉम में हाँ आएगा? वो कंट्री रिप्रेजेंटेशन में है. वो ORG वाला अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सॉरी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के सर, लिए, ठीक है? जी सर. तो जैसे हमने दो पार्ट में जब डिवाइड किया था तो एक जेनेरिक होता है, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? जेनेरिक के अंदर आपके जितने भी मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, वाली फाइल शायद मेरे पास अवेलेबल है. जस्ट वेट, जो हमने आपको एक फाइल दिखाई थी, जस्ट शो यू अगेन, जस्ट वेट, मैं दिखाता हूँ जो हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट टाइम.
So we have this file now. So if you see in this file, basically इस तरीके से हम लोगों ने कुछ डिवाइड किया था. If you see, दिख रहा है ये? Hello? Is it visible? Yes, sir. So इस तरीके से कुछ डिवाइड किया था. तो ये जो आप कह रहे थे ना .gov, this is .gov, ये देख सकते हैं आप. This is also the part of the root. Yeah. edu, org, gov, net. So these are under the category of, you can say, generic type of generic हैं. ये इधर वाले country के अंदर आते हैं. ठीक है. These are the country related and the left one was the generic related. तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था. देखिए लिखा भी हुआ है. Top level domains are divided into two categories, generic and country. इसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा. फिर ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हमारा आ गया. That is called the partial domain name system. Okay, so again we are now connected with the same जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे. Okay, so this is the top level domain. TLD means this is the top level domain. This is the root DNS server, and the whole system is called the hierarchy. This is the hierarchy basically of the DNS server. तो जब भी एग्जाम में आएगा DNS तो आपको ये बनाना पड़ेगा. So DNS clients are basically application layer programs that allows host to query DNS server. तो जो भी हमारे clients हैं are application layer programs that allows host to query DNS servers. Basically, they are installed on host devices and used. जितने भी हमारे clients हैं ये सब कहाँ होते हैं? host devices में installed होते हैं and uses the UDP protocol from the transport layer to send a request to DNS server. So the interaction between the DNS client and the DNS server hierarchy is shown with the example below. So we have an example now. So जैसे मान लीजिए client want to determine the IP address of the host name. तो ये हमारे पास एक host name है. अगर मान लीजिए client इसका IP address recognize करना चाहता है. ठीक है. जैसे कि हमने बताया था host name translate the IP address into the DNS. So इसका अगर IP address वो host चाहता है host तो क्या करेगा? तो पहले तो the client first will contact the local name server. सबसे पहले जो client है वो local name server को contact करेगा. ठीक है. Then the local name server contact one of the root server. So ये जैसे ये branch है आप लोग देख रहे होंगे. ये इसमें यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ काउंट करेगा. सपोज वी हैव ए आईटी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग पहले लोकल सर्वर को देखेगा. फिर लोकल सर्वर विल कांटेक्ट विद द टीएलडी डीएनएस सर्वर एंड देन टीएलडी डीएनएस सर्वर विल कांटेक्ट विद द रूट डीएनएस सर्वर. ठीक है. तो इस तरीके से हमारा डेटा एक्सेस होता है. तो यही लिखा हुआ है, द क्लाइंट फर्स्ट विल कांटेक्ट द लोकल नेम सर्वर. द लोकल नेम सर्वर कांटेक्ट मतलब जैसे जितने भी इसमें जुड़ रहे हैं, जैसे हब pages.com है, तो ये जितने भी इसमें कंटेंट ऐड होते जाएंगे, जितने भी एड्रेस बेसिकली ऐड होते जाएंगे, उनसे होते हुए वो जाएगा रूट सर्वर तक. तो these are the basically local name servers. So local name server contact on the root server which returns IP address for the top level server to for the top level domain.com. ठीक है, domain.com. So the local name server will then contact one of these top level domain server which returns the IP address of an authorized server for this जो भी दिया हुआ था. Fourth one is what the local name server contact one of the authorized server for the given
address and which return to the IP address. Finally, the local name server sends the IP address of pages.com back to the client. Clear? एक नेटवर्क होता है पीयर टू पीयर, दैट इज P2P, इसको हम P2P भी बोलते हैं. Have you heard about this? Peer to peer. Yes. क्या होता है ये? Have you heard about this? तो बताइए जरा क्या है ये peer to peer? नोड टू नोड आपने सुना होगा, होस्ट टू होस्ट सुना होगा, एंड टू एंड. तो व्हाट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क? सर पीयर टू पीयर मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से वाया मीडियम ऑफ इंटरनेट, मतलब दो कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड रहते हैं और उनके बीच में कैसे डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है यूजिंग इंटरनेट. यहाँ पे जो पीयर है, पीयर हमारा कंप्यूटर सिस्टम को डिनोट करता है. ओके. Okay, so it is basically anyone else want to say something? जैसे कि आप लोगों ने इसमें देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि जैसे हम लोग HTTP की बात करते हैं, ईमेल की बात करते हैं, FTP की बात करते हैं, इन सब में एक क्लाइंट सर्वर रिलेशन होता है. क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर की तरफ और सर्वर उसको एक्नॉलेज करता है. क्लियर? बट इफ वी टॉक अबाउट द P2P नेटवर्क, दैट इज पीयर टू पीयर बेस्ड नेटवर्क, so it is somehow different than other one, means HTTP, email and FTP. इसमें क्या होता है, P2P एप्लीकेशन में intermittently connected host called peers communicate with each other with minimal or no reliance on dedicated server. ठीक है? With minimal or no reliance on dedicated server. So P2P डिजाइन में बेसिकली फाइल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो है कैसे होता है. तो फाइल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन आर डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट लार्ज फाइल्स टू डिफरेंट होस्ट ऑन ए नेटवर्क बाय द सर्वर. The file can be an operating system, movie file, or a new software. Yes. So in traditional client-server application, all the hosts connected to one server and download a file. Traditionally क्या होता है कि हमारे जितने भी होस्ट हैं वो एक सर्वर से कनेक्ट होके फाइल को एक्सेस करते हैं. So this places a huge burden on the server in terms of computation and bandwidth. So चूंकि एक ही सर्वर से सारे कनेक्टेड हैं तो सर्वर पे बहुत ज्यादा फाइल का प्रेशर, फाइल एक्सेसिंग का क्या आता है, प्रेशर आता है. ठीक है? तो उससे ओवरलोडेड हो जाता है सर्वर. तो इन P2P फाइल डिस्ट्रीब्यूशन host can connect both to the server and to each other. जो भी होस्ट हैं वो सर्वर से भी कनेक्टेड है और एक दूसरे जितने और भी होस्ट हैं उनसे भी कनेक्टेड रहते हैं. When the host download a file from the server, it can redistribute any portion of the file it has received to any other peer. So this is the major part of this. Clear? So this is the major part of this. So when a host download a file from the server, it can redistribute any portion of the file it has received to any other peers. Clear? Thereby assisting the server in the distribution process. So exactly so यही हो रहा है कि जो सर्वर पे पूरा बर्डन आ जाता है, उस बर्डन को रिलीज किया जा रहा है. क्लियर? तो इसमें जो है जो भी हमारे पीयर्स हैं या जो भी हमारे होस्ट हैं वो क्या करते हैं, जब अवेलेबल, जैसे मान लीजिए कोई फाइल डाउनलोड करता है सर्वर से, तो इट कैन रीडिस्ट्रीब्यूट एनी पोर्शन ऑफ द फाइल, अपनी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है फाइल को, किसी भी फाइल के पोर्शन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है which it has received to any other peer. Yeah?
Yes, sir. thereby assisting the servers in the distribution process. So an example of a distributed BitTorrent system. So BitTorrent was originally developed by RAM part of so BitTorrent ये आपका एक सिस्टम है, देख सकते हैं. It is a protocol that is one of the popular P2P protocol for file distribution. So exactly इसमें यही है कि जो सर्वर है उसको ओवरलोडिंग होने से बचाना है कि सर्वर से एट ए टाइम सारे होस्ट कनेक्टेड होते हैं. So to make a distributed system, the overloading on the server is what little bit relax. So the protocol allows a number of peers to share a single file. So a file is distributed among peers as chunks with a typical chunk size of 256 kilobytes. So the collection of all peers participating in the distribution of a particular file is called a torrent. So जो collection of all peers participating in the distributed of a particular file is called a torrent. ठीक है? So this is what BitTorrent, basically BitTorrent protocol. Clear? Now we have some questions regarding this. So जैसे what is a protocol? मैं these protocols and application protocols like SMTP, FTP and STTP. Clear? So हमारे protocols क्या हैं? प्रोटोकॉल्स में हम लोगों ने कई सारे पढ़े हैं. SMTP, FTP, STTP, SMT, SNMP. क्लियर? एप्लीकेशंस क्या है? जैसे SMTP इज यूज फॉर ये हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको मैच कराना है एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग. SMTP किस पर्पज के लिए यूज होता है? You have the options. Then we have a FTP. How can you link these? So FTP is exactly used for the file transfer purpose. SMTP is used for the email purpose. Clear? And STTP is used for the World Wide Web. Are you getting? Yes, sir. इसको अगर हमें लिंक कराना है, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं and we need to link with the applications related to them. So SMTP is used for the email transfer. Basically, FTP is used for the file transfer. STTP is for the World Wide Web services. Yeah. Then we have a difference between IP address and the port number. Can anyone explain what is the difference between IP address and port number? Hello? Can anyone have a difference between IP address and port number? बताएगा क्या है आंसर? किसी को पता है? IP address and port number में क्या डिफरेंस है? सिद्धांत. Yes, sir. IP address and port number में क्या डिफरेंस है? सर जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमारे होस्ट को स्पेसिफाई करने के काम में आता है, और जो पोर्ट नंबर होता है वो हमारी एप्लीकेशन या सर्विस को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है. कोई और? आईपी एड्रेस से जो हमारा सिस्टम का एड्रेस होता है वो स्पेसिफाई होता है, एंड जो हमारा पोर्ट नंबर होता है वो हमारा एक्सटर्नल जो भी हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं लाइक पोर्ट को यूज कर रहे हैं वो उसको आइडेंटिफाई करता है.
और कोई बताएगा कुछ? किसी और कुछ होता है? और सर आईपी एड्रेस जो होता है वो न्यूमेरिकल लेवल होता है जो हर कंप्यूटर को असाइन किया जाता है, उन जो भी कनेक्टेड होते हैं ओवर अ नेटवर्क। जो पोर्ट नंबर होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो एक कम्युनिकेशन के एंड पॉइंट पे दी जाती है किसी भी एप्लीकेशन के। अच्छा, अगर इन जनरल हम बोलें तो ये कह सकते हैं कि जो आईपी एड्रेस है इज उसमें यूज्ड टू पोर्ट नंबर भी। आइडेंटिफाई ए होस्ट यस सर। और ए ग्रुप ऑफ होस्ट इन ए नेटवर्क ना। यस सर। जो भी मतलब हमारा एक ये होस्ट जो है। हमारा, हाँ, मतलब आईपी एड्रेस जो है आइडेंटिफाई करता है एक होस्ट को या कई सारे होस्ट को किसी नेटवर्क में। ठीक है। और जो पोर्ट नंबर होता है वो आइडेंटिफाई करता है किसी पर्टिकुलर सर्विस को जो किसी होस्ट पे रन कर रही है। आर यू गेटिंग? कोई यस सर। पर्टिकुलर सर्विस मान लीजिए किसी होस्ट के पास या किसी होस्ट पे रन हो रही हो, तो इट इज जस्ट आइडेंटिफाइड बाय द पोर्ट नंबर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। Then we have other questions also in this sequence. कि जैसे why do HTTP, FTP, SMTP and POP3 run on top of TCP rather than on UDP? This is also the question कि हम लोग क्यों HTTP, FTP, SMTP and POP3 को रन करते हैं TCP टॉप पे, मतलब ऑन द TCP rather than UDP। इसके बाद है ये सब बहुत ही मतलब फंडामेंटल क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछे जाते हैं एज इंटरेक्शन आल्सो। क्लियर? सो रिगार्डिंग द सब्जेक्ट एज इंटरेक्शन क्वेश्चंस ये सब पूछे जाते हैं। सो अभी तक जो बताया इसमें किसी को डाउट? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नो सर। ओके, सो इसमें और सारे क्वेश्चन हो गए, ये माइम वगैरह हो गया। माइम माइम हेडर जी सर हो गया। एक्सप्लेन माइम हेडर हो गया। सर माइम आपने क्लास में माइम हेडर हो माइम गया। आपने क्लास में डिस्कस किया था ना, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। हाँ, डिस्कस किया था, मतलब मैं ये पूछा माइम हेडर हो गया आप लोग का? क्वेश्चन है इसमें माइम हेडर। sharing regarding mime. Just wait, I'm sharing the file. Okay, so if you see, we have the MIME related question. कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप लोग इसमें कर लीजिएगा, डिफरेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डिफरेंसेस इसमें बहुत पूछे जाते हैं, डिफरेंसेस आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है?
जी सर। है ना। डिफरेंसेस बहुत आते हैं एग्जाम में, कोई ना कोई डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा। दिस इज व्हाट WWW मॉडल, ये देख लीजिए आप लोग, मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है, is a framework for accessing linked document from the internet. So the web, also known as WWW, the web consists of a worldwide collection of document or web pages. So each pages may contain link to other pages anywhere in the world. ठीक है। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? इट इज ए फ्रेमवर्क फॉर एक्सेसिंग लिंक डॉक्यूमेंट फ्रॉम द इंटरनेट। इट इज ऑल्सो नोन एज WWW, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। कलेक्ट करता है डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस को, ठीक है। So it is a consist of collection of the document or web page. So each page may contain link to the other page anywhere in the world. So user can follow a link by clicking on it. So pages are viewed with a program called the browser. So the browser fetches the page requested, interprets the text and formatting commands on it, and displays the page on the screen. So the string of text that are linked to other pages are called the hyperlink. जो भी हमारे टेक्स्ट के स्ट्रिंग्स होते हैं, तो लिंक टू अदर पेजेस वी कॉल द हाइपरलिंक। सो बेसिक मॉडल अगर हम देखें, this is the basic model of the WWW. So this is the basic model. So you can see this is the client where the current page displayed by the browser. This is the display, and this is the server, that is abcd.com. This is the server xyz.com. So they are having two servers here. The link exactly xyz.com. This is the web server. You can see this is the internet. Basically, the internet is there. So they are exactly covered with the they are exactly involved with the internet services. So we have a TCP connection over here through which they are connected. So the browser program is there. Here you can browse any kind of program. So this is how they are connected, exactly interlinked with each other. So if you talk about the client side, so browser is a program that can display web page. So in the client side, basically this is the client, this is the server. So these are the server, this is the client. On the client side, a browser is a program that can display web page. So browser जो है यहाँ पे यही web page को display कराएगा browser program on the client side. And when an item is selected, the browser follows the hyperlink and fetches the page selected. So the pages are named using URL, considering a typical URL as, जैसे आपको URL दिख रहा है यहाँ पे, so this is the URL where when a user clicks on a hyperlink, the browser carries out the following steps in order to fetch the page. जैसे कोई यूजर हाइपरलिंक पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो ब्राउजर है वो उस पर फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्म करेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू फेच द पेज। पहला स्टेप क्या है कि ब्राउजर डिटरमाइंस द यूआरएल फाइंड करेगा उसका, जो भी आपने हाइपरलिंक पे क्लिक किया है। सेकंड स्टेप इज व्हाट, द ब्राउजर आस्क्स डीएनएस फॉर द आईपी एड्रेस ऑफ, इसका जो आईपी एड्रेस होगा उसको फाइंड करने की कोशिश करेगा। तो डीएनएस से पूछेगा व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ दिस,